Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, ajir video re ame kichi question solve kariba from the topic Gauss law. The Gauss law statement kon hochi na the total electric flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed within the surface. तामने Gauss law relate करे electric flux linked with a closed surface to the charge enclosed inside it. तो सेई गॉस लॉ को बेस करिकी किछि किछि क्वेश्चंस जोटा कि एग्जाम रे आसीबार चांस अछि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ताको हमें सॉल्व करिबा तो हमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कोन देछि फर्स्ट क्वेश्चन पचार छै जे डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट तो ए जो क्वेश्चन देछि एटा होछि गोटे 3 मार्क क्वेश्चन एथिरे फर्स्ट हमें डिफाइन करियो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड देन वी हैव टू राइट द एसआई यूनिट ता सहित गोटे 2 मार्क रो गोटे प्रॉब्लम देछि तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कोन कहि परिबा ना electric flux the link with a surface may be defined as the number of electric field lines passing normally by passing perpendicularly through that surface. And what is the SI unit of electric flux? Na electric flux or SI unit hochi Newton per coulomb into meter square. Haegi na electric flux or formula hochi electric field into area. तो electric field hochi Newton per coulomb and area hochi meter square. तो Newton मीटर स्क्वायर पर कूलम हम लिखि परिबा किबा ता सहित हम आ कोन लिखि परिबा ना इलेक्ट्रिक फील्ड को हम एक्सप्रेस करंती वोल्ट पर मीटर हिसाब रे सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वोल्ट पर मीटर ताको जो मल्टीप्लाई कर देबे एरिया मीटर स्क्वायर रे तो आंसर आसी जबो वोल्ट इनटू मीटर ओके तो आइदर हम लिखि परिबा न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर एटा ठीक हबो or if you want you can write volt into meter so you can write the answer in two ways तो तापर फोकस करिबा on the numerical part तो से क्वेश्चन कोन देछि the electric field components in the figure shown are ex कहला alpha x ey हला 0 ez equal to 0 where alpha is a constant तार वैल्यू होछि 100 newton per coulomb meter so you have to calculate the charge within the cube assuming A is equal to 0.1 meter. तो भलसे हमें बे डायग्राम देखिबा जो डायग्राम देइछि ए डायग्राम रे गोटे क्यूब अछि and you can see that cube ro each side केते कहिछि A is the side of the cube and ए जो रीजन रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से इलेक्ट्रिक फील्ड रा कंपोनेंट्स सब कोन कोन अछि तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटा होची अल्फा इनटू x तो एथरो में श्योर हे जिबा जे द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म रादर इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x मींस द x कोऑर्डिनेट हमें कहि परिबा द पोजीशन अलोंग x एक्सिस बट द y कंपोनेंट एंड द z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर 0 ता माने अलोंग y एक्सिस किबा अलोंग z एक्सिस किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ओनली अलोंग x एक्सिस तो केवल एई डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करूची एंड नाउ लुक एट द क्यूब हमें जानि छे गोटे क्यूब रो 6टा फेस थाए तो हमें क्यूब को भलसे देखिबा देन हम जानि परिबा जे क्यूब रो जो तीनटा साइड अछि लेंथ ब्रेथ हाइट देखिबा दोस थ्री साइड्स आर पैरेलल टू द थ्री एक्सिस बा हम या भी कहि परिबा जे द फेसेस ऑफ द क्यूब आर पैरेलल to xy plane to yz plane and to xz plane तो हमें देखिबा जे what is the charge located or what is the charge enclosed within the cube and here we have to assume that a equal to 0.1 meter okay तो a और a होची the side length of the cube जोटा होची 0.1 meter and ये जो अल्फा कहिची ex equal to alpha x कहला तो अल्फा रे वैल्यू केते कहला 100 न्यूटन पर कूलम मीटर ओके तो इस डाटा को यूज करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करिवा सो एडा होजे गोटे गॉस लॉ रिलेटेड क्वेश्चन तो गॉस लॉ कोन कहूची गॉस लॉ कहूची जे द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो जदी हमें फ्लक्स बाहर करि परिबा इफ वी नो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस देन चार्ज इनक्लोज बाहर करबा पाई फार्मूला कोन हे जिवो फार्मूला हे जिवो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 ता माने जदी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज सरफेस रे हमें
एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर देबा हमें पाई जिबा जे केते अमाउंट रो चार्ज इनक्लोज हे रही इनसाइड द सरफेस. So now our first problem is to find the electric flux linked with the cube. तबे देखो क्यूब रे 6टा फेस अछि किंतु 6टा फेस हम देखिबा जे को फेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहिबो नाही. तो जदि देखिबा टॉप सरफेस पाई एरिया वेक्टर एमती आसीबो अपवर्ड आसीबो बिकॉज़ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द सरफेस एंड फॉर द बॉटम सरफेस एरिया वेक्टर आसीबो डाउनवर्ड. ठीक अछि. And for the front surface along z-axis, for the back surface it will be along minus z-axis. तार माने 6टा सरफेस रु आमे देखिबा 4टा सरफेस टॉप बॉटम फ्रंट एंड बैक जो 4टा सरफेस अछि 4टा सरफेस रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसीबो नाही काहे कि ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स रो गोटे जनरल फार्मूला होची E वेक्टर डॉट A वेक्टर बाका लिखि परिबा EA cos थीटा. जदि थीटा है 90 डिग्री ता माने इफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जदि 90 डिग्री हे गेला देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जिवो. तबे देखिबा जो टॉप सरफेस अछि टॉप सरफेस पाई आ बॉटम सरफेस पाई जो एरिया वेक्टर आसीबो फॉर द टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस जो एरिया वेक्टर आसीबो दैट एरिया वेक्टर विल बी अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस और अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस. किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड केवल अछि एक्स एक्सिस रे अछि वाई एक्सिस रे किछि इलेक्ट्रिक फील्ड नाही एवं जेड एक्सिस रे भी किछि भी इलेक्ट्रिक फील्ड नाही केवल एक्स एक्सिस रे इलेक्ट्रिक फील्ड अछि. तो जदि इलेक्ट्रिक फील्ड अछि एक्स एक्सिस रे और एरिया वेक्टर अछि आइदर प्लस वाई रे किबा माइनस वाई रे तो हम जानि छे एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो से केस रे फ्लक्स रहिला. ठीक सेमिति फ्रंट सरफेस देखो और बैक सरफेस देखो. फ्रंट सरफेस रो एरिया वेक्टर आसीबो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस और जो बैक सरफेस अछि बा जो रियल सरफेस अछि तार एरिया वेक्टर जीवो अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस. But again, electric field achi along x-axis. The x-axis and z-axis they are also perpendicular to each other. तार front surface और back surface रे भी electric flux आसीबो नहीं because electric field and area vector are perpendicular to each other. तो केवल right surface ये जो right surface रहिला और जो left surface रहिला ताको बे कंसीडर करिबा. तो right surface देखिबा जदी तो right surface पे कोन हबो area vector आसीबो towards right. For the left surface area vector jibo towards left. So according to the definition area vector is directed normal or area vector is given by the direction of area vector is given by the outward drawn normal. Okay. तबे फर्स्ट बाहर करिबा जे what is the flux through the left surface. What is the flux through the left surface. तबे देखो लेफ्ट सरफेस रो कोऑर्डिनेट केते अछि काहे कि मोटे फर्स्ट कहि दै छी जे एक्स एक्सिस रे जो इलेक्ट्रिक फील्ड अछि से इलेक्ट्रिक फील्ड गोटे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नुहे बाटा गोटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नुहे बिकॉज़ ई एक्स होची अल्फा इनटू एक्स ता माने यदि एक्स रो वैल्यू चेंज हबो ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू भी चेंज हबो. तो एक्स रो मीनिंग कोन एक्स कोऑर्डिनेट तमे देखिबा जे लेफ्ट सरफेस पाई एक्स कोऑर्डिनेट केते तो ऑलरेडी क्वेश्चन रे कहि दै छी एठी जो डायग्राम रे कहि दै छी जो लेफ्ट सरफेस टा अछि सेटा ओरिजिन रु a दूर रे अछि ता माने लेफ्ट सरफेस पाई x is equal to a for the left surface x equal to a but for the right surface x केते हे जिवो देखो राइट सरफेस एटा तो लेफ्ट सरफेस ऑलरेडी a डिस्टेंस रे अछि और लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस डिस्टेंस होची अगेन a बिकॉज़ एटा होची द लेंथ ऑफ द क्यूब. तो लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस भितरे डिस्टेंस होची a ताले राइट सरफेस पाई x कोऑर्डिनेट केते हे जिवो a plus a एटा हे जिवो 2a. तो मन रखता राइट सरफेस पाई मो x को केते पकेबी 2a पुट करबी. ओके तबे देखिबा जे व्हाट इज द फ्लक्स टू द लेफ्ट सरफेस ताको लिखिबी इलेक्ट्रिक फील्ड at the left surface dot area vector of the left surface. Okay तो एटा हम करनो एटा हे जिवो el into al into cos थीटा देखिबा एठी थीटा केते होची तो लेफ्ट सरफेस पाई एरिया वेक्टर आसीबो टुवर्ड्स लेफ्ट बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स राइट एज पर द क्वेश्चन. तो एठी एंगल हे जिवो 180 डिग्री तब लिखिबा एठी cos 180 अब cos 180 होची -1 तो एटा हे जिवो केते -el into al
ओके तो माइनस EL तो हम देखिबा जे लेफ्ट सरफेस पे x केते x होची a तो EX होची अल्फा इनटू x तो x जगह मैं a पके देबी सॉरी a पके देबी then मते मिल जिवो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EL तो लिखि माइनस EL को लिखिबी अल्फा इनटू x जगह मैं a पुट कली ओके नाउ AL एरिया ऑफ द लेफ्ट सरफेस तो गोटे क्यूब रो ईच सरफेस होची गोटे स्क्वायर तो जदि क्यूब रो साइड होची a तो एरिया हे जिवो a स्क्वायर तो एठी मु लिखि देबी a स्क्वायर लिखि देबी तो एटा केता आंसर माइनस अल्फा a क्यूब ओके तो पाई गले जे लेफ्ट सरफेस रे केते अमाउंट रो फ्लक्स अछि एंड द फ्लक्स इज फाउंड टू बी नेगेटिव तबे देखिबा जे फाई r केते हबो व्हाट इज द फ्लक्स टू द राइट सरफेस अगेन से सेम प्रोसेस से फॉलो करिबा लिखिबा er डॉट ar तो देखो राइट सरफेस पाई एरिया फैक्टर अछि आउटवर्ड रो नॉर्मल माने टुवर्ड्स राइट जीवो आ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अछि टुवर्ड्स राइट तापटे द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन तो एटा हे जीवो ar cos 0 जेतु एंगल सेम होची तो एंगल टा 0 हे जीवो सो इफ द डायरेक्शंस आर इक्वल देन द एंगल विल बी 0 डिग्री तो er केते हे जीवो अल्फा इनटू राइट सरफेस पे x केते x होची 2a तो एठी मु 2a पुट करबी ओके और ar केते अगेन राइट सरफेस रो एरिया केते हो सेम आसीबो a स्क्वायर आसीबो एंड cos 0 होची +1 तो एटा केते एटा हे जिवो 2 अल्फा a क्यूब ओके तमे फाई l पाई गले लेफ्ट सरफेस रे फ्लक्स पाई गले फाई r पाई गले और बाकी जो चार्टा फेस रहला चार्टा फेस रे फ्लक्स 0 हो जिवो बिकॉज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री तो टोटल फ्लक्स फाई टोटल देखते हबो ऐड कर देबो फाई l प्लस फाई r बिकॉज़ फ्लक्स हो जे गोटे स्केलर क्वांटिटी सो यू हैव टू ऐड देम लाइक स्केलर्स तो फाई l होची माइनस अल्फा a क्यूब प्लस फाई r होची 2 अल्फा a क्यूब तो एटा हेचिबो अल्फा a क्यूब ओके तो हम एठी फ्लक्स पाई गले व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विथ द क्यूब बट क्वेश्चन पचारे जे व्हाट इज द चार्ज विथ इन द क्यूब तो एठी हमें ए फॉर्मूला यूज करबा जे तमे फ्लक्स पाई गले तो चार्ज एनक्लोज पे हमें यूज करबा को फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 तो लिखिबा एठी जे q enclosed is equal to epsilon naught into 5 बा epsilon naught into 5 केते 5 होची अल्फा a to the power 3 ओके तो एतिक लिखिला परे नाउ द टाइम इज टू पुट वैल्यूज हमें जानि छे जे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होची 8.854 into 10 to the power minus 12 तो अल्फा र वैल्यू केते कहिची 100 कहि दिछि एटी क्वेश्चन रे तो एठी तबे 100 लिखि दबो अल्फा होची 100 एंड a क्यूब a होची 0.1 मीटर तो 0.1 रो हमें क्यूब कर दबा ठीक अछि देन द कैलकुलेशन पार्ट इज अप टू यू केवल स्टेप्स कहि देली हमें को स्टेप फॉलो करके सॉल्व करिबा तो बेसिकली ए जो क्वेश्चन रे हमें कोन देखिले गोटे क्लोज सरफेस देइची इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कहि देइची एंड हमको बाहर करबा अछि जे व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब तो हमें एथिरे को स्टेप फॉलो कले हमें देखिले जे गॉस लॉ कहूची जे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट तो जदि हमें फ्लक्स बाहर करि पारुचे सेते हमें एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई करले हमें पाइ जे व्हाट इज द चार्ज इनक्लोज्ड तो सेही मेथड फॉलो करिकि हमें हिसाब कर देले जे व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब ओके सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन तो एबे मैं नेक्स्ट मूव करिबा आ गोटे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन को देछि a hollow conducting sphere of inner radius r1 and outer radius r2 has a charge q on its surface. A point charge minus q is also placed at the center of the sphere. So what is the surface charge density on the inner and outer surface of the sphere? And second becomes that use Gauss law of electrostatics to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere. तबे फर्स्ट डायग्राम ड्रा करिवा तो क्वेश्चन कोन देछि गोटे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर अछि माने मेटालिक स्फीयर इट इज हॉलो इट हैज इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 तो एबे हमें डायग्राम ड्रा करिवा एटा होछि गोटे हॉलो स्फीयर एटा होछि तार इनर सरफेस एंड दिस इज द आउटर सरफेस ओके तो एटा होछि r1 इनर रेडियस एंड एटा होछि r2 जोटा होछि
outer radius. Okay, तो सी कौन कहला जे ये जो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर रे टोटल क्यू अमाउंट रो चार्ज अछि तो हमको जଣା अछि हम एटा ऑलरेडी पढी छे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ रे जे इफ वी गिव चार्ज टू ए मेटालिक conductor then the charge always lies on the surface whatever charge is given to a metallic sphere or any metallic body the charge always lies on the surface तार माने सरफेस ऊपर ऑलरेडी क्यू अमाउंट रो गोटे चार्ज अछि ओके तापर कोन कहला एठी ना ए पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज आल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर एबे हम कोन करबा गोटे पॉइंट चार्ज जानिबा जोडा होछि केते जोडा होछि माइनस क्यू सो से माइनस क्यू पॉइंट चार्ज कोनी के हम रखिबा कोठी सेंटर रखिबा तापर जो कैविटी अछि गोटे हला इनर सरफेस आ हला आउटर सरफेस तो एबे जो कैविटी बनला ए जो कैविटी अछि से कैविटी भितरे हमें गोटे चार्ज रखले माइनस क्यू माने गोटे नेगेटिव चार्ज रखले आनी से कोन पचाला व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर एंड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर तो देखो एबे कोन चेंजेस आसीबो जत्ते बळे हमें गोटे माइनस क्यू चार्ज आनी रखिबा एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर तबे कोन हबो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन ए इनर सरफेस रे गोटे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हे जिवो हम जाने छे जे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तबे कोन हबो ना सेंटर रे माइनस क्यू चार्ज अछि तो इक्वल अमाउंट रो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होबा कोठी एट द नियर सरफेस त माने ए जो इनर सरफेस अछि सेठी प्लस क्यू अमाउंट रो गोटे चार्ज इंड्यूस हे जिवो एंड एट द फार सरफेस कोन हबो अगेन माइनस क्यू अमाउंट रो चार्ज इंड्यूस हे जिवो एटा होची कोन the property of induction in a metal ठीक अछि त पाई गेले जे माइनस क्यू चार्ज अछि कोठी एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर आउ से जो माइनस क्यू चार्ज अछि कोन करिवो से स्फीयर रो इनर सरफेस रे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस करिवो आउ तर आउटर सरफेस रे माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस करिवो तबे बाहर करिवो जे व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी त माने सिग्मा बाहर करिवो सिग्मा इनर सरफेस तो इनर सरफेस और सिग्मा केते हेजबो इनर सरफेस रे केते चार्ज अछि प्लस क्यू अमाउंट रो चार्ज अछि आउ तर एरिया केते एरिया होची 4 पाई r1 रो स्क्वायर बिकॉज़ इनर सरफेस होची गोटे स्फेरिकल शेप रो आउ तर रेडियस होची r1 तो एरिया हेजबो 4 पाई r1 स्क्वायर हमको जणा अछि जे सरफेस चार्ज डेंसिटी माने कोन चार्ज पर यूनिट एरिया तो इनर सरफेस रे प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हेची तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई r1 स्क्वायर सेटा हेजिबो कोन हेजिबो सेटा हेजिबो द सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर द इनर सरफेस ठीक सेमिति आउटर सरफेस पे सिग्मा केते हेजिबो हम देखियो जे आउटर सरफेस रे केते चार्ज अछि तो इनिशियली कैपिटल क्यू अमाउंट रो चार्ज थिला एंड ड्यू टू इंडक्शन माइनस स्मॉल क्यू अमाउंट रो गोटे चार्ज इंड्यूस हेछि तो टोटल चार्ज हेजिबो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू this is the total charge on the outer surface divided by area of the outer surface so right 4 pi r2 square because r2 is the radius of the outer surface okay so bit a khatam bit b kon dechi na use Gauss law of electrostatics to obtain the expression for the electric field at a point lying outside the sphere तो एबे में कोन करबा गोटे पॉइंट चूज करबा जोटा अछि कोठी आउटसाइड द स्फीयर अछि ओके तो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो आमे देखो बाहर करबा यूजिंग गॉस लॉ तबे देखो आमे जानि छे जे गॉस लॉ को यूज करया को हले आमे हेल्प बखार गॉसियन सरफेस रो एंड क्लास 12 रो जो सिलेबस अछि से सिलेबस रे आमे पढी छे अबाउट टू टाइप्स ऑफ गॉसियन सरफेस गोटे होची कोन गोटे होची सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आ गोटे होची स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो जत्ते बळे आमे गोटे प्रॉब्लम फेस करूचे तो आमे को टाइप रो गॉसियन सरफेस चूज करबा सेरा डिपेंड करबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो नेचर ऊपर तो आइदर आमे सिलिंड्रिकल चूज करबा किंबा आमे चूज करबा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस तो प्रॉब्लम को देखला पारे हमको गोटे आईडिया पड़े आसीबो जे को टाइप रो गॉसियन सरफेस चूज करबार अछि तो एई केस रे जेहेतु गोटे स्फेरिकल बॉडी देइछि तो हमें स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चूज करबा तो एठी में कोन करबा गोटे इमेजिनरी गॉसियन सरफेस चूज कर दबा स्फेरिकल शेप रो ताको में कहबा गॉसियन स्फीयर ठीक अछि
तो गॉसियन स्फीयर को चूज करला परे एबे हमें देखिबा जे एई जो पॉइंट अछि एई पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हबो ओके सपोज एई पॉइंट रो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज r this distance is r ओके तो एबे हमें कोन करिबा लिखिबा what is electric flux through the Gaussian surface ना closed surface integration E dot ds तो आमे ऑलरेडी ए भया क्वेश्चंस करिचे डेरिवेशन रे करिचे कोटे स्फेरिकल शेल पई आउटसाइड पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते हुए तो एठी कोन हबो ना इलेक्ट्रिक फील्ड हबो रेडियली आउटवर्ड जेतु कोटे स्फेरिकल बॉडी ऊपर चार्ज अछि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियली आउटवर्ड एंड आमे ए स्फीयर जे कोनसी लोकेशन रे जदि कोटे स्मॉल एरिया चूज करिबा तारो डायरेक्शन भी आसीबो रेडियली आउटवर्ड त माने थ्रू आउट द स्फीयर एट एवरी पॉइंट electric field and area vector will be the same direction but they will be parallel to each other the angle between them will be 0 degree तो टाइम लिखिबा एठी E ds cos 0 closed surface integration तो हम यदि E को बाहर को नहीं जाए because the electric field will be will have the same value at every point on the sphere E को बाहर नहीं जाबा integration of ds এটা হয়ে যাব E into 4 pi r square ठीक अछि and Gauss law कोन कहउछि ना electric flux is equal to the total charge enclosed inside the Gaussian surface divided by epsilon naught तो phi ର value ଆମେ केते पाइछे E into 4 pi r square पाइछे ठीक अछि त q enclosed केते अछि त माने ई जो Gaussian surface ड्रा करले से Gaussian surface भितरे टोटल केते अमाउंट चार्ज अछि तबे देखो फास्ट आमे कोन करथले आमे कैपिटल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रखिथले हा परे ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड से स्फीयर सेंटर रे गोटे माइनस क्यू चार्ज अछि तो टोटल चार्ज बा नेट चार्ज केते हिजबो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ठीक अछि दिस इज नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एटा होछि गॉस लॉ स्टेटमेंट तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पचारिछि तो इलेक्ट्रिक फील्ड केते हिजबो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट capital Q minus small q divided by r square. So Gauss law use करके हमें ए वे रे बाहर कर पारे what is the electric field at a point outside the sphere. Okay. So in this way you can solve this question. तो एबे हमें आ गोटे क्वेश्चन को मूव करबा तो ये जो क्वेश्चन कोन रही a point charge plus 10 microcoulomb is at a distance of 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in the figure. So actually figure एठी मो पेस्ट करले को भूली जाइछि so I will draw the figure. What is the magnitude of electric flux through the square? Okay तो देखो suppose कोन कहला एमते गोटे स्क्वायर अछि let me draw the diagram here एमते गोटे स्क्वायर अछि ए स्क्वायर रो साइड रो लेंथ केते कहला 10 सेंटीमीटर सॉरी 10 centimeter 10 centimeter is the length of each side of the square तो से स्क्वायर सेंटर रो 5 centimeter दूर रे स्क्वायर सेंटर रो 5 centimeter दूर रे कोटे चार्ज अछि से चार्ज रो वैल्यू केते 10 माइक्रोकूलम ओके सो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कोन देछि कोटे स्क्वायर अछि से स्क्वायर रो लेंथ केते 10 सेंटीमीटर आउ से स्क्वायर रो सेंटर रो 5 सेंटीमीटर ऊपर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर गोटे पॉइंट चार्ज अछि आउ से पॉइंट चार्ज वैल्यू केते 10 माइक्रोकूलम तो क्वेश्चन को पचारछि ना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर केते अमाउंट ऑफ फ्लक्स पास करिवो थ्रू द स्क्वायर तो देखो एठी जदि हम एटी गॉस लॉ अप्लाई करे को चाहूचे ऑलवेज रिमेंबर दैट टू अप्लाई गॉस लॉ यू नीड ए क्लोज सरफेस बिना क्लोज सरफेस रे हमें गॉस लॉ यूज करि परिबा नाही बट ए जो क्वेश्चन रे क्लोज सरफेस देइनी गोटे स्क्वायर अछि ठीक अछि तार ठीक 5 शेप ऊपर गोटे चार्ज अछि तो एटा छ ओपन सरफेस तो एबे हमें कोन करबा एबे हमें गॉस लॉ यूज करबा गॉस लॉ यूज करिके हमें को सॉल्व करबा बट गॉस लॉ यूज करबा पई यू नीड ए क्लोज सरफेस तो जदी मन रखो जदी क्वेश्चन रे
क्लोज सरफेस दे नथिबो तो आमे कोन करबा आमे गोटे क्लोज सरफेस ड्रॉ करबा जहा को हम कहूचे गॉसियन सरफेस तो एबे आमे जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करबा केमती ड्रॉ करबा देखो एबे हम गोटे क्यूब ड्रॉ करबी और से क्यूब रो ऑलरेडी गोटे फेस होची ए जो स्क्वायर टा अछि तो क्यूब रो केतना फेस थाए थोड़ा फेस थाए तो ऑलरेडी गोटे फेस एठी ड्रॉ हिक अछि तो मते ड्रॉ करे पड़िबो आउ पांचटा फेस ड्रॉ करे पड़िबो तो मु का करिबे मु आइडेंटिकल साइज रो पांचटा स्क्वायर ड्रॉ करिबी आइडेंटिकल साइज रो पांचटा स्क्वायर मु बे ड्रॉ करिबी लाइक दिस देखो एमते ड्रॉ करतली तो गोटे क्यूब कंप्लीट हेला आ सब क्यूब रो सॉरी सब स्क्वायर रो केते लेंथ 10 सेंटीमीटर तो ये जो चार्ज अच्छी 5 सेंटीमीटर ऊपर तो से चार्ज कोट रही से कि एट द सेंटर ऑफ द क्यूब तो डायग्राम टिके ना भल से ही पालानी बट यू कैन इमेजिन जेहेतु मु 5 सेंटीमीटर ऊपर रखी चार्ज को एंड मु जो स्क्वायर सब ड्रॉ कली एट ऑल द 5 फेसेस तार लेंथ होचे 10 सेंटीमीटर ता माने जो 10 माइक्रोकुलम चार्ज अच्छी दैट इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब तो वर्तमान गोटे क्लोज सरफेस हेगला तो ये जो क्यूब अच्छे से क्यूब रे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हबो ना चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट तो चार्ज केते अछि क्यूब भितरे 10 माइक्रोकुलम माने 10 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by what is epsilon naught 8.854 into 10 to the power minus 12 so this is the flux to the whole cube किंतु क्वेश्चन पचारिछि जे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ये जो स्क्वायर अच्छी ए स्क्वायर केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसीबो तो मन रखो जे क्यूब होची कोन इट कंसिस्ट ऑफ 6 फेसेस तो 6 टा फेस रे मिसी के एथि होची इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट हमको बाहर करिवार अछि केवल गोटिए फेस रे केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो फ्लक्स थ्रू वन फेस एटा हे जिवो बाय 6 कर दबा टोटल क्यूब रे जेतिके फ्लक्स थिबो बाय 6 करले पाइ जिबा गोटे फेस रे केते फ्लक्स आसीबो ता माने एटा केते हे जिवो एटा होचे 10 टू द पावर माइनस 5 हे जिवो एटा तो 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 6 इनटू व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट एटा होचे 8.85 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12 कैलकुलेशन पार्ट अप टू यू निजे करतबो सो दिस इज द स्टेप to solve this question okay so in this way you can solve this question तो एबे हम जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन कोन देछि इट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन हमें जो क्यूब वाला क्वेश्चन करथिले टू फाइंड द चार्ज इनक्लोज इनसाइड द क्यूब ए टाइप ऑफ क्वेश्चन गोटे बट टिके चेंज कर देछि तो क्वेश्चन कोन दला एठी ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर equal to ex I cap Newton per coulomb for x greater than 0 माने पॉजिटिव x पाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखिबा ex I cap तो जदी x होची पॉजिटिव ताले इलेक्ट्रिक फील्ड हिजबो ex I cap न्यूटन पर कूलम ता माने along the positive x axis इलेक्ट्रिक फील्ड अछि but जदि x हिजबो नेगेटिव ता माने लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0 ताले इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन चेंज हिजबो एटा हिजबो माइनस ex I cap न्यूटन पर कूलम ता माने जदि आमे नेगेटिव x को पळेबा ता माने आमे ओरिजिन रो लेफ्ट को पळेबा ताले कोन हबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन हिजबो नेगेटिव x रे माइनस I cap रे हिजबो A right circular cylinder of length L centimeter and radius R centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis. Find out the net outward flux. Using Gauss law, write the expression for the net charge within the cylinder. Okay, देखो तो एबे हमें क्या करिवा फर्स्ट ड्रॉ करिवा x-axis. Suppose एटा होची x-axis. Okay, तो एटा होची origin x equal to 0 तमने हमें टुवर्ड्स राइट को जिबा हमें पाइबा पॉजिटिव x पाइबा सो एटा होची x पॉजिटिव एटा होची x नेगेटिव तो पॉजिटिव x रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन होचे कोडे टुवर्ड्स राइट ओके इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो ex I cap आसीबो ओके बट जदे में नेगेटिव x को पळेबा माने टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ द
सॉरी लेफ्ट द ओरिजिन बा नेगेटिव एक्स एक्सिस तो से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन भी चेंज हो जिवो इट विल बी एलोन माइनस आई कैप तो एपटे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जिवो माइनस ई एक्स आई कैप ओके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू इक्वली चेंज होची बोथ माने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स रे किंतु डायरेक्शन टा अपोजिट हो जाउची ओके तो एबे कोन कहिची ना गोटे राइट सर्कुलर सिलिंडर अछि जहार लेंथ होची l सेंटीमीटर रेडियस होची r सेंटीमीटर हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन एंड इट्स एक्सिस along x एक्सिस ता माने गोटे सिलिंडर हम ड्रा करिबा से सिलिंडर रो रेडियस केते r सेंटीमीटर आउ से सिलिंडर एक्सिस is coinciding with x axis and the center of the cylinder lies at x equal to 0 বা lies at the origin তো आर मीनिंग कोन तार मीनिंग होची ए सिलिंडर लेंथ जदि l हुए सो एज पर द क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द सिलिंडर इज l एटा होची l ता माने सिलिंडर गोटे हाफ अछि पॉजिटिव x रे आ गोटे हाफ अछि नेगेटिव x रे ता माने एटा होची x इक्वल टू प्लस l बाय 2 एटा होची x इक्वल टू माइनस l बाय 2 ओके एंड तार ओरिजिन रे सिलिंडर सेंटर अछि आ ए जो सिलिंडर रेडियस केते रेडियस होची r r इज द रेडियस r सेंटीमीटर ओके तो से पचाला जे व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स ए सिलिंडर रे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स केते अछि व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स तो देखो बे सिलिंडर रो तीनटा सरफेस थाए दुटा होची प्लेन सरफेस एडा होची गोटे प्लेन सरफेस सर्कुलर शेप रो एडा जोरे प्लेन सरफेस सर्कुलर शेप रो आ गोटे जो कर्व सरफेस अछि तीनटा सरफेस तो तीनटा सरफेस रो केवल दुटा सरफेस रे फ्लक्स आसीबो आ गोटे सरफेस रे फ्लक्स जीरो हो जिवो तो को सरफेस रे फ्लक्स जीरो होबो ना जो कर्व सरफेस अछि से कर्व सरफेस रे फ्लक्स जीरो हो जिवो काहे कि ना कर्व सरफेस रो एरिया इफेक्टर होची परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड अछि आइदर आई कैप रे किबा माइनस आई कैप रे अछि किंतु जो कर्व सरफेस है कर्व सरफेस रो जो एरिया इफेक्टर पाइबा जो नॉर्मल ड्रा करिबा टू द कर्व सरफेस दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन त माने कर्व सरफेस रे किछि भी इलेक्ट्रिक फोर्स आसीबो नाही तो केवल लेफ्ट सरफेस रे आसीबो आ राइट सरफेस रे आसीबो तो लेफ्ट सरफेस पे n कैप केम आसीबो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल को लिख परिबा l कैप फॉर द राइट सरफेस केम आसीबो आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल आपको लिखबी nr कैप लिख देबी ओके तो देखो बे लेफ्ट सरफेस पाई आमे तेरे फ्लक्स बाहर करिबा जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर लेफ्ट सरफेस अछि नेगेटिव x एक्सिस रे तो से केस रे इलेक्ट्रिक फील्ड केम जिवो एलोंग नेगेटिव x एक्सिस ता माने लेफ्ट सरफेस पाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ एरिया वेक्टर भीतर एंगल होच केते 0 डिग्री सेम थिंग फॉर राइट सरफेस रे एरिया वेक्टर होची टुवर्ड्स राइट इलेक्ट्रिक फील्ड भी टुवर्ड्स राइट तो एंगल केते 0 डिग्री हिजबो तो अब लिखबा एठी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स केते हिजबो ना phi l plus phi r लेफ्ट सरफेस रो फ्लक्स प्लस राइट सरफेस रो फ्लक्स तो एटा कोन हिजबो एटा हिजबो el डॉट al प्लस phi r केते हिजबो er डॉट ar ओके तो बोथ केस रे कोन होची एंगल 0 डिग्री लेफ्ट सरफेस पे एंगल 0 डिग्री राइट सरफेस पे भी एंगल केते होची 0 डिग्री होची तो एटा हिजबो el al cos 0 प्लस एटा हिजबो er ar cos 0 cos 0 छु 1 तो एटा हिजबो el al प्लस एटा हिजबो er ar ओके अब इलेक्ट्रिक फील्ड रो वैल्यू कोन देछि ex देछि ओके तो लिखि ex लिखि देबा अच्छा एरिया कोन हबो एटा होची गोटे स्क्वायर लेफ्ट सरफेस कोन गोटे सॉरी गोटे सर्कुलर शेप रो अछि सर्कुलर शेप रो जदी रेडियस r थिबो तो एरिया केते हो एरिया हबो पाई r स्क्वायर हबो किंतु एठी r कहिछि सेंटीमीटर कहि देछि ओके तो r सेंटीमीटर में लिखि परिबा r * 10 टू द पावर -2 मीटर लिखिबा ठीक अछि तो ex * आकु लिखिबा r
ସେଠି ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା ସେ ତାକୁ ବି ଲେଖିବା ex into right ତା surface ବି ଗୋଟେ circular shape ର ଅଛି ଏଟା ବି ପାଏ r ସ୍କୋୟାର ହବ କିନ୍ତୁ r ଏଟା ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ତ ଏଟା actually ମିଟର କରିବାକୁ ପଡିବ ତ ଏଟା ex pi r square plus ex pi r square ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଏଟା ହେଇଯିବ 2ex pi r square ओके तो 2ex देखो एटी इलेक्ट्रिक फील्ड कहि देछि एसआई रे कहि देछि न्यूटन पर किलोमीटर कहि देछि किंतु रेडियस कहि छै मीटर रे सॉरी सेंटीमीटर कहि देछि तो पाई इनटू जो r कहला आके लिखिबा सेंटीमीटर देछि तो r इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जिवो तार हमें स्क्वायर कर देबा तो एटा कते एटा हो जिवो 2ex pi r square into 10 to the power -4 न्यूटन per coulomb into meter square तो एटा होची the total outward flux the net outward flux in linked with that cylindrical surface okay तापर पचला जे गॉस द यूज करे बाहर करे व्हाट इज द नेट चार्ज विदिन द सिलिंडर सिलिंडर भीतर नेट चार्ज केते होची अगेन से सिंपल जिंस जे तमे फ्लक्स पाई गले तो नेट चार्ज केते हिजबो q एनक्लोज केते हिजबो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 तो एप्सिलॉन नॉट इनटू 5 में केते पाइजे 5 पाइजे 2ex pi r square into 10 to the power -4 तो जेहेतु वैल्यू कहिनी ex रो तो एठे में एमती आंसर ती छाड़ दबा यू गेट द फुल मार्क जदी ex रो वैल्यू कहिथिबो देन यू कैन पुट द वैल्यू बट जेहेतु एठी वैल्यू कहिनी रेडियस रो वैल्यू भी कहिनी सो वी विल नॉट गेट एनी न्यूमेरिकल आंसर हमें केवल गोटे एक्सप्रेशन पाई परिबा सो स्टूडेंट्स आज हमें टोटल 4टा क्वेश्चन डिस्कस कले बेस्ड ऑन गॉस लॉ एंड ए टाइप रो क्वेश्चंस तमे एक्सपेक्ट करि परिबो कमिंग बोर्ड एग्जाम रे स्पेशली हम ए जो क्वेश्चन सॉल्व कले क्यूब रो क्वेश्चन एंड ए जो हॉलो स्फीयर क्वेश्चन में जो डिस्कस कले ए टाइप रो क्वेश्चंस तमे एक्सपेक्ट करि परिबो ता सहित गॉस लॉ रो जो तीनटा अछि एप्लीकेशंस कोन कोन अछि गोटे चार्ज्ड थिन वायर पे इलेक्ट्रिक बिल कता हो जोडा होछि लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r माने पका गोटे फॉर्मूला अछि गोटे थिन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर अछि जार लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा तो ता पई r डिस्टेंस दूर रे इलेक्ट्रिक बिल कता हुए ता हो लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आई वुड होछि गोटे प्लेन चार्ज शीट थिबो नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ता पाई इलेक्ट्रिक फील्ड केता हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड गोटे थिन स्फेरिकल शेल रो रेडियस होची केते रेडियस होची कैपिटल आर एंड एथरे क्यू अमाउंट रो चार्ज अछि तो आउटसाइड रे फील्ड केता हो सरफेस रे फील्ड केता हो और इनसाइड केता हो तो आउटसाइड रे फील्ड केते हे जिवो जदी आउटसाइड पॉइंट रो डिस्टेंस स्मॉल r अछि तो आउटसाइड रे इलेक्ट्रिक फील्ड केता हो k q by small r square सरफेस रे फील्ड केता हो सरफेस रे फील्ड हे जिवो k q by कैपिटल r square और इनसाइड रे फील्ड केता हो इनसाइड रे फील्ड 0 हे जिवो तो ए जो तीनटा डेरिवेशंस आपको भलसे प्रैक्टिस करिवो एथरो गोटे डिवीजन आसी पारे सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो पुढे हम देखा नेक्स्ट वीडियो रे विथ न्यू टॉपिक सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय